Hello everyone, this is a video on geography. Okay, now in the previous part we have just completed up to river basin. Now we are going to start with the water resources in India. Is a chapter natural resources, land, soil and water. Now we know that India or in many parts of India, we didn't get the same rainfall as we get used to get in the southern part. Southern part of India has to get the most amount of rainfall, and the lowest amount of rainfall is been given to the what do we say the arid regions. Okay, this is deserted in Jaipur and all those areas. They used to get very less rainfall. Now as we are getting very less rainfall over there, we needed some type of irrigation facilities. Irrigation का मतलब artificially आप पानी अवेलेबल करोगे अपने लैंड को. ओके, that is known as irrigation. But in the regions where there is heavy rainfall, that is the regions of the greatest not deficiency, greatest rainfall, such as the southern part and all the other parts, we know that we have to create different types of dams on the rivers to capture that water and to use them at the time when it is needed more. ठीक है, क्योंकि आप तो हमेशा वाटर नहीं यूज़ करोगे ना, आपको एक टाइम रखना पड़ेगा जहाँ इस टाइम में अभी रेनफॉल नहीं हो रहा है, उस टाइम उनको वो वाटर यूज़ करना है. टू स्टॉप दैट वाटर इन टू अ स्पेसिफिक एरिया एंड टू यूज़ इट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फॉर द बेटरमेंट ऑक्यूपेशन और वी कैन से कल्टिवेशन, वी कैन यूज़ डैम्स. ओके, ये तभी वहीं पर होता है जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होंगे. ठीक है, for checking for because these dams help to prevent different types of flood. Okay, or getting of the land washed away by the water, excess of water. अब इस सब में ये डैम्स ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. Okay, but in the areas that is on the northwestern areas where such as Rajasthan, Haryana, Punjab, we get a very less rainfall, and for that we have to give conservation of rain water. ओके, हम लोग क्या करते हैं, वो रेन वाटर को कंजर्व करते हैं एंड द अंडरग्राउंड वाटर, एंड वी यूज टू यूज़ देम. बट यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर लिखा है मेन पर्पज ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स बाय द फॉलोइंग. मतलब डैम्स बनाने का मेन प्रोजेक्ट्स क्या है, द प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन, टू कंट्रोल फ्लड, टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर एंड टू मेक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी विच इज बीन what do we say which is used to create electricity with the help of water. Now, removing impurities from conservation of water. First is that water, even if it's a renewable sources, but it may have get polluted because we are using nowadays because of this virus, we are not making the water that much contaminated, but previously we used to do so. And to prevent this, we have to improve the remove the impurities. In pure water, there is only a compound of hydrogen and oxygen, which is chemically denoted by a symbol of H2O. If there is any element in the water in the design of impurities, these impurities of the water has to be removed by filtration. These impurities should be removed by filtration. That is by distillation, boiling, and recycling. By these methods, we can clean them up. Okay, now this term conservation includes the efficient use of the protection, resource improvement, and preservation. Water conservation focuses on the issues like the improvement of the vegetation and improvement of the underground water. Now I know that my camera is not working nice. I don't know why it's been happening so, but still please try to understand that part, that it's written that because of this conservation, that is by conservation of the water resources, we are also using it in the different ways, such as we can say for irrigation facilities, for many other things. That as rainwater is also been now used by the techniques of rooftop harvesting, and other things are been also used. Dams are also been used. Now it's written that there are some
Planting trees, bushes and grasses help to check the water surface level. Actually, vegetation covers is essential for the water harvesting. It also helps in recharging the underground water and the trees, and because of this plantation of the trees, underground water will also increase. Okay, because if there is land, there will be water. If there is no land, cemented area, no water will be there. No water will be able to seep down the ground. Okay, our that is underground water level will also get deteriorated. Water is renewable resources. Recycling of the water, especially at the source of contamination, is the one best way to remove the impurities. One best way, that means what, we have to also clean that water for betterment use. Okay, it involves the artificial recharge of the underground water by allowing the rainwater to step underground to maintain the quality of life. It is essential to conserve the water resources and to keep them clean and pure. It's very important. Sprinkling irrigation is common in the developing countries. In this method water is distributed in the ground water pipes. It happens by helping the canals and the irrigation through open channels. It keeps useful in dry areas. Water supplies through the pipes right to the roof planes. Okay, now I think it's very much clear. It's very simple in language. Now, some people are having problem with the question answers. They have been saying that the answers are not clearly written over here. जस्ट इसीलिए मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो समझा देती हूँ, देन यू विल बी एबल टू राइट द आंसर. व्हाट इज़ इरीगेशन? इरीगेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियली कोई भी वाटर रिसोर्स से आप अपने लैंड में वाटर डाल सकते हो. दैट मीन्स इट्स नॉट नेचुरल. ओके, ये है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बाय वेज. आप नेट से भी लिख सकते हो. इट्स अप टू यू. जस्ट राइट टू द पॉइंट आंसर्स. उसको व्हाट इज़ सॉइल कंजर्वेशन? सॉइल कंजर्वेशन का मतलब है सॉइल को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसे सॉइल कंजर्वेशन बोला जाता है. वो भी यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक है. गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया. मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया में आपका क्या पड़ता है? डैम्स पढ़ रहा है. ठीक है. यस, डैम्स आर बिंग मल्टीपर्पज़. ये क्योंकि बहुत सारे यूजेस होते हैं. यहाँ पर आपका देखो दिया हुआ है बहुत सारे यूजेस. देन वी हैव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द वाटर एंड इम्प्रूविंग इट्स क्वालिटी. आप ये जो है ये लिख सकते हो, आप खुद से भी बना के लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड? इट्स नॉर्मल क्वेश्चन, आप नेट से लिख सकते हो. बाय विदरिंग एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स सॉइल ऐसे फॉर्म होते हैं, वो आप लिख सकते हो. दैट इज़ नॉट so much important. And then we have what do you understand by water resources? Water resources, what is water resources, ये आपको लिखना है. ठीक है. what is fresh वाटर? फ्रेश वाटर स्पेशली जो पॉन्ड्स एंड लेक्स के जो वाटर होते हैं वो जो सॉल्टी नहीं होता उसे फ्रेश वाटर बोला जाता है. वाट इज़ बिन यूज्ड? आप लिख सकते हो. सॉल्ट नॉर्मल वाटर्स किस लिए यूज़, आपको नॉर्मली भी पता है लेक्स का वाटर पॉन्ड्स का वाटर किस लिए यूज़ होता है, आप लिख सकते हो. आई वुड सजेस्ट दैट यू कैन टेक हेल्प ऑफ नेट. ओके, बिकॉज यहाँ पर इस बुक में कोई भी क्लियर डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है कोई चीज़ का. लेकिन हाँ, आप अगर समझ लोगे चैप्टर देन इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड टू राइट दोज आंसर्स, बिकॉज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हियर आंसर्स आर गिवन. ठीक है. थैंक यू.